कैसे करेंगे सर? कोडलेस कितने हैं? 3 है ना। अरे उसके पास एक कॉलर माइक है, 2 माइक। कितने चाहिए होंगे आपको? एमपी को तो ले लो, एमपी का नहीं बाद में दिक्कत हो इसलिए तो जैसे एक तो अपन यहाँ जय हिंद एसडीएम मैम, बीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कैंडिडेट जय भाई मत, कैंडिडेट बाहर से चलेगा तेज चल। कैंडिडेट कम, कैंडिडेट जय भाई मत। बुलबुल स्वागत के लिए तैयार हो। क्या नाम है आपका? आयशा। And what is your name? What is this onion? क्या है? This is scarf. It's a mark of your school. आपका बुलबुल घेरे में स्वागत है। स्काउट्स क्लैप को। बुलबुल बड़ी सलामी के लिए तैयार हो। 2 बिट 2 2 बिट 2 2 बिट 2। बुलबुल घेरा गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। हम है छोटी बुलबुल, हमें होता कितना है, कोशिश करना हमारा, आओ खेले सच्चे खेल। हम है छोटी बुलबुल, हमें होता कितना है, बुलबुल नियम। बुलबुल सच और विनम्र होती है, बुलबुल बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। बुलबुल मोटो, बुलबुल मोटो कोशिश करेंगे। प्रस्थान। तो आपका मोटो क्या है? कोशिश करेंगे। सावधान। आपका सब घेरे में स्वागत है। विशाल गर्जना। अकेला। हम सब वीर होंगे। करमवीर 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 हो। हम सब वीर होंगे। करमवीर 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 हो। हम सब वीर होंगे। करमवीर 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 हो। सावधान। कपटी दो। प्रतिज्ञा कर जाऊंगी यथाशक्ति ईश्वर में अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, कब नियम को मानूंगा और प्रत्येक दिन एक भलाई का काम करूंगा। कब स्वच्छ और विनम्र होता है, कब बड़ों की आज्ञा मानता है, कब
Welcome to PM Shri Kendriya Vidyalaya. So much, and how are you? Fine, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Thank you, बेटा. Thank you. आप कुछ नहीं खाओगे? What is your good name? राघव. राघव. आपका? जिज्ञासा. जिज्ञासा. Good. मनन सिंह. अभिजीत. Contingents! Thumb! Contingents! Die by mud! महकता चमन है, आपके आने से रोशन यह भवन है। लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ी शोभा अपार, मुख्य अतिथि का स्वागत है दिल से बार बार। Good morning everyone. Today is indeed a moment of pride for our school as we welcome a personality whose life is a perfect blend of dedication, discipline and determination. We feel truly honored to have among us our esteemed chief guest, the Sub-Divisional Magistrate Ma'am, Dr. Anshu Priya. Ma'am, your presence adds dignity and meaning to this new parliament where young voices will echo the spirit of democracy. Now I request Principal Sir, Mr. Om Prakash Sir, to kindly come forward because just like the tree gives shade and oxygen, your guidance nurtures society with fairness and vision. Ma'am, to honor our chief guest with a shawl as a gesture of reverent hearts. आज का यह दिन और लोकतंत्र का उत्सव है। युवा है देश की शक्ति, लोकतंत्र का आधार, विचारों से जगमगाए यही संसद का उद्धार। आज जब युवा अपनी बात निर्भीकता से कहेंगे तो यह सभा बनेगी सच्चे लोकतंत्र का आईना। Youth Parliament students with the functionality of parliamentary system in India. It provides a significant platform for young individuals to actively participate in parliamentary style debates, discussions and decision-making process. Without further ado, I seek your permission, ma'am, to begin the proceedings of today's Youth Parliament. Honorable will now take the oath of formation. Ma'am, do you want the oath of formation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Sanskrit, please. अहम नैना बारोड युवा संसद सदस्यत्वे निर्वाचित अस्मै स्वरस्य नाम्ना शपय अहम विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्यामि तथा भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च श्रीमतां रक्षामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम उद्यत अस्मै कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निवीक्ष्यामि। मैं नंदिनी परमार जो युवा संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगी। प्रति सच्ची आस्था से निष्ठा रखूंगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगी। To inform the House about the demise of a former colleague MP from Nanded constituency, Mr. Vasantrao Balwantrao Chavan, who died on 26 August 2024. Mr. Vasantrao Balwantrao Chavan
Bhavan was one of the most popular and efficient leader. For last 25 years, he was in politics and served the nation. His life is source of great motivation for all. May his soul rest in peace. Honorable Speaker, I pay my tribute to Mr. Vasantrao Balwantrao Chauhan, whose death has been deeply mourned by all. He was a self-made leader whose contribution towards the development of nation is monumental. His down-to-earth personality and affable nature endeared him to many. He was equally respected by all political parties. I would like to pay my condolences to his family. अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री वसंतराव बलवंतराव चौहान जी के निधन से पूरे देश को आकस्मिक आघात पहुंचा है। उनके प्रति मैं प्रतिपक्ष की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मैसूर के अशोकपुरम में जन्मे श्री वसंतराव बलवंतराव चौहान जी ने अपनी मेहनत, लगन एवं सेवा भाव से अपने जीवन की अप्रतिम ऊंचाइयों को छुआ। लगभग 25 साल के सक्रिय राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। मैं अपनी ओर से उनके परिवार और सज्जनों की पीड़ा में सहभागी हूं और उनके इस दुखद समय में अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करे। Prime Minister, to pleasure in introducing to you and you through to the House, my Petroleum Minister is Anushri. Now the question, Speaker. Through you, I would like to ask the Ministers of Chemicals and Fertilizers and Government that will Ministers of Chemicals and Fertilizer be pleased to state A. The quantum of fertilizer used in our country during the past 10 years, year-wise, state-wise and district-wise for Andhra Pradesh. B. The quantum of fertilizer produced in our country during the said period for Andhra Pradesh. C. The quantum of fertilizers allocated and distributed during the said period, year-wise, state-wise and district-wise for Andhra Pradesh. D. The details of soil nutrient level in the country during the said period, year-wise, state-wise and district-wise for Andhra Pradesh. Minister of Chemicals. Honorable Speaker, through you, I would like to answer the opposition that A to D, a statement is laid on the table of the House. A to C, the requirement, availability, sales and closing stock of fertilizer via urea, DAP, MOP and NPKs across the state, including the state of Andhra Pradesh during the said period 2014-15 to 2025-26 is placed at Annexure A. Further, as per the information received from the state of Andhra Pradesh, the requirement, availability, sales and closing stock of fertilizer via urea, DAP, MOP and NPKs in the district of Andhra Pradesh during the said period 2014-15 to 2025-26 is placed at Annexure B. The production of fertilizer in the country during the said period 2014-15 to 2025-26 across the state, including the state of Andhra Pradesh, is placed at Annexure C. D. As per the information received from DA and FW, the details of the soil nutrient level in the country during the said period, state-wise, is enclosed at Annexure D. Further, as per the information received from State Government of Andhra Pradesh, the details of the district-wise soil nutrient level in Andhra Pradesh during the said period is enclosed in Annexure E. Question number 1. Speaker, Madam, through you, I would like to ask that will the Minister of Ayush be pleased state the details of amount of Ayush funds allocated and spent under the National Ayush Mission in Haryana, particularly in the Sonipat parliamentary constituency, the details of mechanism set up by the government to reallocate the unutilized funds, whether the government has conducted any special assessment to assess the slow progress of Haryana government in this regard. If so, the details thereof along with the details of action plan for submitting the annual report in this regard. Ayush, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to answer the opposition that A and D, the statement is laid on the table of the House. A. Ministry of Ayush is implementing the centrally sponsored scheme of National Ayush Mission, NAM, through state and UT governments including Haryana
for overall development and promotion of Ayush system. Under NAM, Ministry supports the efforts of state and UT governments by providing financial assistance to them under different activities as per the provision of NAM guidelines against their submitted state annual action plans. Under NAM, rupees 25,591 lakhs has been allocated as consolidated grant in aid for implementation of different approved activities of SAAPS to the state government of Haryana from 2014-15 to 2024-25. And as reported by the state government, out of the allocated amount, they have utilized amounting to rupees 24,007 lakhs. Further, as reported by the state government of Haryana, rupees 44 lakhs has been allocated to district Sonipat during 2024-25, and out of that, 36 lakhs has been utilized. However, under NAM, there is no provision for district-wise grant and aid released by Government of India. B. Ministry has requested to the state and UT governments to refund the unspent balance to reallocate to the same other approved activities to expedite the expenditure without changing the object head. C and D. The government is regularly and monitoring the progress of implementation of different activities under NAM scheme through various states as mentioned below. First, to collect activity-wise physical and financial progress on regular interval from the state and UT governments including Haryana. Second, to collect utilization certificates along with supporting documents from the state and UT governments including Haryana. Third, to conduct the field visit by the central team of Ministry of Ayush time to time to analyze the actual progress of implementation of different activities for which state and UT governments including Haryana has reported expenditure and submitted utilization certificates. Fourth, to conduct regional review meetings with the state and UT governments including Haryana for assessing the implementation status and to decide way forward for the better outcome. Fifth, to conduct one-to-one meeting with the state and UT governments including Haryana for detailed review of physical and financial progress. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सदन में कोई ऐसा विधेयक लाना चाहती है जो कि आपराधिक प्रवृत्तियों वाले उम्मीदवारों से संबंधित है। बी, इस विधेयक का नाम क्या है। सी, यह विधेयक कब प्रवृत्त होगा। डी, अगर ऐसा है तो सरकार इस विषय में सदन को विस्तार से बताए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा इस विधेयक का लाया जाना प्रस्तावित है। इन अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान अधिनियम 2025 है, जो कि संविधान के 130वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित है। ये विधेयक उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। संविधान के अनुच्छेद 75 क के खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किया जाएगा। अंततः कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार किसी 30 दिनों की अवधि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, तो ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा दंडनीय है। उसे ऐसे अभिरक्षा में जाने के पश्चात 31वें दिन तक प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक नहीं दी जाती है, तो वह उसके पश्चात आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा। परंतु यह कि प्रधानमंत्री के मामले में इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिनों की किसी अवधि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करता है, जो ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा दंडनीय है। उसे ऐसे गिरफ्तार और निरुद्ध किए जाने के पश्चात 31वें दिन तक अपने पद त्याग देना होगा, और यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता है तो वह उसके पश्चात आने वाले दिन से प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। Question number 104, Riya, please. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of External Affairs please to state A. Whether Prime Minister of New Zealand visited India recently. B. If so, the details thereof along with the issue discussed during the visit. C. The details of bilateral trade agreement deals signed between the two nations during the said visit. D. Whether government considering to restart the negotiation for a bilateral free trade agreement FTA which is held on 2015, and if so, the details thereof.
E. Whether the two nations have also signed any bolstering security cooperation in the Indo-Pacific, China's growing military inroad in the region, and if so, the detail thereof. Honorable, the Minister of External Affairs, please. Madam, through you, I would like to answer the opposition that A. Yes, B. At the invitation of Prime Minister, the Prime Minister of New Zealand, the Right Honourable Christopher Luxon has paid an official visit to India on 16 to 20 March 2025, and he was accompanied by high-level delegations including the ministers, senior officials, businesses, media and Indian diaspora community in New Zealand. Discussions were held between the Prime Minister of India and New Zealand covering the entire gamut of bilateral, including defence and security, trade and investments, education and support, tourism and people-to-people ties. The two Prime Ministers also exchanged views on global and regional issues. On multilateral cooperations, Prime Minister Luxon called on Honorable Rashtrapati Ji, several dignitaries called on Prime Minister Luxon, including External Affairs Ministers, Minister of Health and Welfare, and Minister of Chemicals and Fertilizers. Prime Minister Luxon joined the inaugural session of 10th Raisina Dialogue 2025 on 17 March 2025 in New Delhi as the chief guest and delivered the keynote address in Mumbai. Discussions were held between the Prime Minister and the keynote address. In Mumbai, discussions were held by the Prime Minister of New Zealand, the states of Maharashtra and New Zealand with governors. The details and announcements made during the agreements are signed and during the visits are announcements. 1. Launch of negotiation between India and New Zealand of Free Trade Agreement FTA. 2. Launch of negotiations between India and New Zealand on an agreement facilitating the mobility of professionals and skilled workers. 3rd, New Zealand joined the Indo-Pacific Ocean Initiative IPOI. 4th, New Zealand becomes member of the Coalition for Disaster Resilience Infrastructure CDRI. Bilateral agreement signed. 1st, Memorandum of Understanding on Defence Cooperative between the Ministry of Defence of India and the New Zealand Ministry of Defence. Authorized Economic Operator Mutual Recognitions AEOMRA between the Central Board of Indirect Taxes of Custom of India CBIC and the New Zealand Customs Services. Memorandum of Cooperation on Horticulture between the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of India and the Ministry for Primary Industries of New Zealand. 4th, Letter of Intent on Forestry between the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in India and the Ministry for Primary Industries of New Zealand. 5th, Education Cooperative Agreement between the Ministry of Education of Republic of India and the Ministry of Education of New Zealand. D. India and New Zealand announced the launch of negotiation for a comprehensively and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement FTA. The New Zealand-India FTA negotiation aimed to achieve balanced outcome that enhances supply chain integration and improve market access. E. Bilateral documents signed and announcements made during the visits are mentioned in Part C. India's relations with New Zealand stand firm on their footing and are independent of action of any third country. 5, Part B, please. Honorable Speaker, Madam, through you I would like to ask some question to Minister of Port, Shipping, Waterways and Government Debt. Question number 8. The feature of Dredging Corporation of India. B. Whether the government has made policy decision that DCI will require to compete in tenders even for government bodies. If so, the detail thereof, and if not, the reason thereof. C. Whether the DCI lack machinery to compete in private players. If so, the reason thereof. D. The manner in which DCI would able to compete with private players despite the lack of machinery and the step taken proposed to be taken by the government to overcome this drawback of DCI. I'd like to answer the opposition that A. Dredging Corporation of India Limited DCI, established in the year 1976, is not just a service provider, it is the backbone of India's maritime infrastructure. It operates under the direct administrative control of 4 of India's major port authorities, Visakhapatnam, Paradip, Deen Dayal and Jawaharlal Nehru Port Authorities, with the strategic shareholdings of 19.47%, 18%, 18% and 18% respectively. The corporation commands unmatched expertise in maritime operations, particularly in dredging and land reclamation. Its portfolio includes capital and maintenance works, beach nourishment, shallow water operations and marine project consultancy.
DCI services extend not just to major ports, but to national institutions such as the Indian Navy. Hence, the DCI defines its benchmark. Its performance is a testament to strategic execution, technical excellence, and national importance. Its value is not just in the work it performs, but in the confidence it brings to the future of Indian ports. B. No, madam. The Ministry of Port Shipping and Waterways took decisive action in 2021 by issuing dredging guidelines, complete with a detailed SOP to are empowered to award projects to that company on a nomination basis with prior approval from the Board of Trustees. However, even this route is governed by strict standards. The principle of competitive market price discovery must be upheld to ensure that cost efficiency, execution speed and quality are never compromised. At the same time, ports retain the flexibility to opt for open competitive bidding projects, reinforcing both transparency and efficiency. Hence, the Ministry reserves the right in the interest of the public. C and D. The DCI boasts an impressive fleet, a true powerhouse on water. It includes 10 trailing suction hopper dredgers with a combined hopper capacity of 59,513 cubic meters, 2 cutter suction dredgers, 1 backhoe dredger and several auxiliary crafts. The complete fleet details are provided in Annexure 1. With a commanding market share, DCI doesn't just participate, it dominates the field of dredging across the country. By leveling up. To augment its capacity, DCI is procuring a brand new 12,000 cubic meter suction hopper dredger, the first of its kind, proudly made in India. This Beagle series vessel is being constructed at the Cochin Shipyard Limited. So the DCI is not just ready for the future, it is setting the standard for it. Words of wisdom from our young and vibrant chief guest, SDM Ma'am Dr. Anshu Priya. It will be a matter of honor and prestige for all of us to hear from you, from your short span of experience, but vast and varied experience gained during the journey of perseverance, grit and hard work in reaching the pinnacle. Chief guest Ma'am, please come over here. So good morning to all of you, respected Principal Saab and all the respected and esteemed teachers of KV. So first of all I thank आपके Principal Saab को कि आज मेरे को इतनी अच्छी opportunity दी to come and see this youth parliament, and you know I get nostalgic because I think some 10 to 15 years ago I was in a school and we had very regular sessions regarding the same. So it's always a pleasure and a privilege to be amidst the students. वैसे there is so much of administrative work that the schedule gets tightened, and I really wished that I would have stayed for the 40 minutes duration. I think the entire session is of 40 minutes. I really wished I could have been here, but nonetheless, whatever I listened from you, I really think that the future of our nation is in safe hands. But at the same time, I have certain observations and certain learnings that you should incorporate. आप जो अभी, how many of you want to get into some sort of public speaking field? तो politician बनना चाहते हैं, teacher बनना चाहते हैं, civil services में आना चाहते हैं. How many of you are here? Raise your hands, please. Raise your hands. Okay. कम है. ऑपोजिशन वाले ज़्यादा है, अच्छी बात है. जो सत्ता में है उसको तो क्वेश्चन करना चाहिए. इट्स अ गुड थिंग. तो आप जो ये प्रक्रिया अभी कर रहे थे, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल पार्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड. आपने जितनी बातें करी, आपको डिड यू अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू वर सेइंग टू ईच अदर? यू अंडरस्टूड? हु वाज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? You were about all of those things, but when I see and speak about those things, but I didn't research about it. Okay, so that is what I was saying. आप इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो as a student, you should be very inquisitive, ना, to find out जो आप बोल रहे हैं. You should know the nuances of that particular thing. That will add to your knowledge. What is CDRI? What is Indo-Pacific Initiative? And I hope all of you are tech savvy. All of you use internet and have phones. Everybody has, right? I think quite a school के class 11, 12, 10, 11, 12, 9. So मतलब 10th के ऊपर अपन मान सकते हैं, है ना? So 10th, 11th and 12th. So quite in that age bracket where you all are tech savvy.
तो नेक्स्ट टाइम एक ही फीडबैक है, आप जब भी कोई भी चीज बोलें, आप चाहे यूथ पार्लियामेंट में बोलो या आप अपने घर पे बात करो, आप अपने टीचर से बात करो, तो मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू स्पीक यू नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, दैट विल ऐड टू योर नॉलेज. And आज the world has advanced so much that even when we used to prepare for civil services, I gave my exam in 2021 and I am a medical graduate of 2019. So even at that time we remember that everything used to come on internet and Google. तो आप अगर इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस गूगल करेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. And every stepping stone, everything that you read, everything that you go through, it will add to your knowledge. So just incorporate that. And I think आप बेटा the girl in the blue saree, shipping, right? She was quite well rehearsed. बिना देखे बोला, और जो बोला तो लग रहा था कि पता है उनको कि क्या पूछा है ऑपोजिशन में. क्या पूछा था आपसे ऑपोजिशन में? Ma'am, the feature of DCI and everything related to DCI. What is DCI doing in the Yes. field? So do you know about DCI? Ma'am, not much. Not much. Okay. I don't expect भी कि आप अभी भी काफी छोटे हो, but फिर भी नेक्स्ट टाइम से इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए. आप जो भी बोलते हैं उसके बारे में यू शुड नो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप ऑल इज गोइंग वेल. डू यू पीपल ओनली स्टडी और यू हैव सम हॉबी? डू यू प्ले एंड डू यू हैव सम हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? Okay, so I was just welcomed by a series of kids. एक तो बुलबुल ग्रुप था और एक कब. Yes, very nice, very nice. I remember वो छोटे बच्चे बहुत ही बढ़िया. तो मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय इस चीज़ के लिए सर जाना भी जाता है, how to incorporate extra curricular things with the academic work, which is the USP of this particular brand. So study भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अपने हॉबीज को जरूर आप परस्यू करो, है ना. प्लेइंग, पेंटिंग, ड्राइंग, स्विमिंग, whatever you like, please pursue it along with that. And the session of today was very good. You people have good linguistic skills, which is very commendable, and improvement is something that we all should endeavor for each day. I wish you all the very best, and I thank once again Principal Sir and the management of KV for having me here. And sooner, एक हमारा, आपको कितने बच्चों को पता है कि इलेक्शन रिलेटेड जो अवेयरनेस ग्रुप्स होते हैं वो भी आपके स्कूल्स में है? Do you know about it? अच्छा, he knows. What is your good name? Priyank. Very good. So I was yesterday saying to Om ji कि कुछ दिनों में हमारे यहाँ एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रपोज्ड है. किसी ने सुना है क्या ये? किसी ने अगर न्यूज़ देखा हो पिछले 2-3 महीनों से? अभी देखा है बिहार इलेक्शन का. बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपने देखा एक सुप्रीम कोर्ट में देयर वाज अ केस गोइंग ऑन. एनीबडी? चलिए कोई बात नहीं, आप इसको देखना. व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको गूगल कीजिए. इसके बारे में जो भी 1-2 बच्चे मेरे को पढ़ के अच्छे से बताएंगे उसको फिर मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगी. एंड he or she will be the one who will be going with me to all the schools, and then we will be creating awareness in the voters. है ना, जो वोटर्स आप लोगों में से तो कोई भी अभी उस एज में नहीं होगा. What is the age for voting in India? Very good. So once you reach, well, that is also in a matter of debate कि 18 साल is the appropriate age or not, या क्या करना चाहिए. बट जो भी है अभी 18 साल ही है, और जब आप 18 साल के हो जाओगे तब आपको वोटिंग के राइट्स मिलते हैं. बट कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे एग्जैक्ट राइट्स क्या है और क्या प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव होता है. और उसको लेके देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन द सोसाइटी विच ट्राई टू क्रिएट मिसट्रस्ट. As administration or even as common citizens, our aim is to quell that kind of कोई भी अगर भ्रांति फैल रही है, किसी भी प्रकार की अफवाहें हैं, उसको हम कैसे क्वेल करते हैं. उसमें आप सभी बच्चों का, बिकॉज आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद आप सभी वोट डालेंगे, आप हमारे न्यू यूथ वोटर्स रहेंगे, जैसे आज आपका यूथ पार्लियामेंट है. तो 2 or 3 of you please go through the SIR and I will coordinate with Om ji. And whosoever is ready, whosoever is well equipped and well learned on that topic will be a part of voter awareness campaigns with me that we will be launching in the recent days. So once again,
Wish you all the very best and please continue with your session. Thank you. Thank you so much, ma'am, for honoring this session, this parliamentary session, by your presence. I would like to ask some questions to the Minister of Ayush and Government that A. The details of efforts made by the government to promote Ayurveda and other system of Ayush in city of Delhi, where the large chunk of population depends on traditional medical practices, and B. The number of institutes and training centers related to yoga, naturopathy, Unani, etc. proposed to be set up in Delhi, especially in Northeast Delhi, and what are the reasons thereof? Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to answer the opposition that A. The government through its various initiatives has been able to promote Ayush system of medicine, including Ayurveda, among people in the country, including in city of Delhi. With a view to fulfill the mandate of propagation of Ayush system of medicine, the Ministry of Ayush implements a central sector scheme for promotion of information, education and communication, IEC, in Ayush. This aims to reach out to all the sections of population across the country. Under the scheme, Ministry organizes national and state level Arogya fairs, Yoga Feds, Utsav, Ayurveda Birds, celebrate important days of Ayush system, participate in health fairs, melas, exhibition, etc. Provide financial assistance by organizing seminars, workshops, conferences and to conduct multimedia campaign, etc. To create awareness among citizens regarding Ayush system of medicine, also the Ministry is implementing the centrally sponsored scheme, namely National Ayush Mission, NAM, through state and UT governments for development and promotion of different Ayush systems in the country and providing financial assistance to them as per the proposal received in their state annual action plans. State and UT governments may avail financial assistance by submitting proposals through state annual action plans as per the NAM guidelines. At present, there is no such proposal. Question number 107, Chanda, please. Ask some questions to the government. Will the Minister of Parliamentary Affairs to please state that A. What are the objectives of the Youth Parliament scheme being organized by the Ministry of Parliamentary Affairs? B. Whether in view of the wide appreciation that the scheme has erected 184 districts and all over the country. C. Whether the states and union territories are being given any financial assistance to implement the same. D. How many states and union territories are organizing the Youth Parliament competition in their schools? Sir, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I would like to answer the opposition that in order to develop democratic ethics in the younger generation, the Ministry conducts a youth parliament competition in various categories of schools, colleges and universities with a view of strengthening the roots of democracy, inculcate the healthy habits of discipline, tolerance in the views of others, to enable the students' community to understand the working of our parliamentary institutions. The Ministry of Parliamentary Affairs have organized scheme of NYP competition for various categories of schools, colleges and universities. The Honorable Prime Minister shared the idea of becoming the Voice of India in his Mann Ki Baat in address of 31st December 2017. He has got an idea whether they could organize a mock parliament in every district of the country. He reiterated his desire to organize a district youth parliament in his address at the time of inaugural of 22nd National Youth Festival on 12th Jan 2018. The Youth Parliament scheme was first introduced in the school in Delhi in 1966 to 1967. Then after in 1988, this scheme was launched in all KVs of the country at the national level. The new Youth Parliament scheme at the national level, one for Jawahar Navodaya Vidyalaya, the other for universities, colleges, were launched during 2007 to 2008. The 14th All India WIPS Conference held at Mumbai on 4th and 5th Feb 2008 was recommended inter alia that the Ministry of Parliamentary Affairs should be increased in the following order. Legislatures having members up to 100 rupees 3 lakh per annum. Between 100 to 200 rupees 4 lakh per annum. Legislatures having members of up to 200 rupees 5 lakh per annum. The ceiling in the respect of UTS having no legislature may remain in charge, that is rupees 2 lakh per annum union territory. The matter has been examined by the Government of India in consultation with Ministry of Finance, and it has been
decided to enhance the financial assistance as recommended by 14th All India WIPS Conference from financial year 2009 to 2010. Calling attention motion. Please call the attention of the Health Minister. Motion Ma'am, through you, I would like to ask some questions to the Minister of Health and Family Welfare and Government Head. Question number 1. Whether the government has formulated any policy to provide modern healthcare facilities in Haryana, particularly in Sonipat Parliamentary constituency, and if so, then the details thereof. Question number 2. The percentage of poor people suffering due to lack of healthcare facilities and treatment in Haryana. Question number 3. Whether the most of the hospitals in Haryana have not received the fund released by the government for the same purpose, and if so, then the reason thereof. Honorable Speaker Ma'am, through you, I would like answer the opposition lead. A. The detail of healthcare facilities in the state of Haryana, including district Sonipat, are available at website of Minister of the Health and Family Welfare at the Uniform Resources located as under RHS percentage 221 and 22. D. As informed by the state of Haryana, total number of 45.20 lakh families of Haryana comprising of 1.51 crore individuals are covered under 3 different schemes. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Chirayu and Chirayu Extension Scheme. C&D's amount of rupees 524.1 crore had been released under National Health Mission and rupees 17.67 crore had been released under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission for the state of Haryana in the financial year 223 and 24. B. As informed by the state of Haryana, ABPMJ and Chirayu, total 14,52,569 claims amounting rupees 18,050.45 crore had been paid to empaneled hospital. Public 502 and private 790. And as per National Health Authority portal, claims submitted 22nd July 2024 had been paid, which is within the turnaround time guidelines specified by the National Health Authorities. Honorable, the Minister of Urban Development, please. Respected Speaker Madam, I beg to lay on a table a copy of Unified Building Bylaws for Delhi 2022. Published number S/1191/E is Gazette of India dated 22nd March 2022 under Section 58 of Delhi Development Act 1957. Secretary General to report the message from the upper chamber of the Youth Parliament. Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary of Upper Chamber of Youth Parliament in accordance with the provision of values of procedure and conduct of business in the Upper House of Youth Parliament. I am directed to enclose a copy of Central University's Amendment Bill 2024, which has been passed by the Upper Chamber of Youth Parliament as its sitting held on 2024. Secretary General to lay on the table a copy of the Central University's Amendment Bill 2024 as passed by the Upper Chamber. Madam Speaker, I lay on the table of the House the copy of Central University's Amendment Bill 2024 passed by the Upper Chamber. Honorable members, I have to make an announcement. On behalf of the honorable members, I have a great pleasure in extending a warm welcome to Mr. Gabriel Boric Font, President of Republic of Chile, who is on visit to India as our honored guest. The President of Republic of Chile, Mr. Gabriel Boric Font, arrived on 1 April 2025. They have now set in the special box. We wish him a happy and fruitful stay in our country. We also convey him a warm greeting and many best wishes. The move adjournment motion is the House with Ms. Disha Parmar. Those who are in favor will say aye. Those who are aye. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Disha, please. Honorable Speaker Madam, through you, I would like to ask some questions to the Minister of Health and Family Welfare. I want to point out an incident which was held in 15 February 2025, in which at least 20 people were killed and several were injured at St. New Delhi railway station. When concluding announcement
deserted to in rush to board attend Prayagraj Mahakumbh Mela. So, what is your opinion, ma'am? Who is responsible for this? Honorable, the Minister of Railway, please. Honorable Speaker, ma'am, through you, I would like to tell the House that we pay our tribute to the victims of accident, and in future, such event will not take place. We are trying our best to resolve all the problems. We have even asked the officer to give a justification letter stating all the consequences which lead to such disastrous incident and avoid such incident to happen again in future. Thank you, madam. Now the legislative business. Introduction of bill. Bill item number 13, माननीय रेल मंत्री जी. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए. जो पक्ष में है वो हाँ बोले, जो विपक्ष में है नहीं बोले. मुझे लगता है यह हाँ है, हाँ है, हाँ है. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि रेल अधिनियम 1989 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. Honorable Speaker, Madam, I oppose the Railway Amendment Bill 2024. The Minister has stated in the Statement of Objects and Reasons that the functioning and independence of the Railway Board will be enhanced with this bill. All the provisions of Indian Railway Board Act 1905 are proposed to be incorporated in this bill. There is already an old bill from 1989. Originally, as we have mentioned, that the Railway was separated from PWD, Public Works Department, then the Railway Board was set up. May I represent to you, Honorable Speaker, that the Railway Board was a bureaucracy? That can happen. It is inflexible. It is unable to take timely decisions and it is unable to reach the people of the country. The Railway Minister, instead of bringing unnecessary bills that have functioned for a long time, should give attention to the railway accidents. He himself was present when a legal tragedy happened in Balasore. He was again present when the Kanchenjunga Express rammed into a station. The whole question is, what is the railway doing for the safety of the railway passengers? They introduce Vande Bharat, which is good. They take you fast. But I'm against this bill because I refuse to be silent when the lives of people are at stake. Your railway board has clearly failed to control railway accidents. What changes are you even providing with the passing of this bill? सभापति जी, मुझे लगता है कि धैर्य दत्ता जी के पास में शायद काम की बहुत कमी है. इसलिए कोई इनकी मजबूरी है. इनके पास कोई काम नहीं होगा. आप अपनी पार्टी से निवेदन करें कि ज्यादा काम है. अब मैं अपने विषय पर आता हूँ. ये संशोधन विधेयक लाने की जरूरत क्यों है? जैसा आप सभी जानते हैं कि रेलवे जब भारत में आई तब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी. रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ. जब रेलवे का विस्तार बढ़ा तो जरूरत महसूस हुई कि इसमें अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए. इसीलिए वर्ष 1905 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं इन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तब तक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई. रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब तक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आकर एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आई. इसकी जरूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में रेलवे अलग तरह का डिपार्टमेंट है. यह एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है और दूसरा इसमें नेटवर्क इफेक्ट होता है. 3 अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं. आज भी यह प्रश्न आता है और माननीय सांसद कई बार यह प्रश्न पूछते हैं. मान लीजिए एक जगह से रेल में सामान चढ़ा और दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है, स्टेशन पर देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए उन रेलवे सिस्टम की भी जरूरत होती है. तभी सामान एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है. फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाइड होना चाहिए. इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था. जब इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके वर्ष 1989 में नया कानून आया, उसमें एक कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पाए थे. इसके साथ सेविंग क्लोज के जरिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ लिंक रखा था, लेकिन यह एक कमी थी जिसे इस बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है. इससे रेलवे बोर्ड की कंप्लीट पावर एनहेंस होगी और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी. प्रश्न यह है कि रेल अधिनियम 1989 और संशोधन करने वाली विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो पक्ष में है वो हाँ बोले, जो विपक्ष में है नहीं बोले. मुझे लगता है यह हाँ है, हाँ है, हाँ है. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. सभापति महोदय,
मैं प्रस्ताव को पुनर्स्थापित करता हूँ। बिल नंबर 110। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया जाए या नहीं। जो पक्ष में है वो हाँ बोले, जो विपक्ष में है नहीं बोले। मुझे लगता है यह हाँ है, हाँ है, हाँ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के खतरे से बचाने के साथ साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून तुरंत धन कमाने वाले धार्मिक वादों पर फलने फूलने वाले शिकारी गेमिंग प्लेटफॉर्म की लत, धन बर्बादी और सामाजिक संकटों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और रचनात्मक विकास की ओर ले जाते हुए परिवारों की सुरक्षा के सरकार के संकल्पों को दर्शाता है। इस मुद्दे की गंभीरता को दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय रूप वर्गीकरण में गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में बांट दिया है और इसे नियंत्रण खोने, अन्य दैनिक गतिविधियों की उपेक्षा करने और हानिकारक परिणामों के बावजूद लगातार खेलने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में भी निर्णायक कार्रवाई क्यों आवश्यक है। परिवारों ने अपनी कुछ विधेयक मामलों में इन खेलों से जुड़ी आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड भी हो रहे हैं। सरकार ने खतरों को पहचानकर कड़े कानून बनाकर इसका समाधान किया है। साथ ही विधेयक एक सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाता है। यह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रों को डिजिटल और रचनात्मक इकोनॉमी के सबसे गतिशील क्षेत्र में से एक मानता है। इसमें नवाचार, संगठनात्मक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण अवसर है। यह ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करता है, जो संगठित कंपटीशन वीडियो गेम है और सुरक्षित ऑनलाइन सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देता है। यह रचनात्मक डिजिटल एंटरटेनमेंट को सट्टेबाजी, जुए और काल्पनिक धन वाले खेलों से स्पष्ट रूप से अलग करता है, जो लाभ के झूठे वादों कर उपयोगकर्ताओं का शोषण करता है। ऐसा करके विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि भारत डिजिटल नवाचार के लाभों को अपना सके और साथ ही अपने लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक पक्ष से बचा सके। प्रश्न यह है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम 2025 विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में है वो हाँ बोले, जो विपक्ष में है नहीं बोले। मुझे लगता है यह हाँ है, हाँ है, हाँ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव को पुनः स्थापित करता हूँ। The House is adjourned to the next Youth Parliament. First of all, I would like to congratulate all the students on the success of this Youth Parliament session. You all did very well. So give us a big round of applause to yourself. All the people who have been behind the curtain in the success of this program, who have been preparing it for so many days. For this vote of thanks, I would like to call Mali sir, our senior most PGT, to come on the stage and give a vote of. बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया जो हमारे बीच उपस्थित रही, एसटीएम साहिबा, विद्यालय के प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम देखकर निश्चित रूप से आप सब लोगों का मन गदगद हो गया होगा। बहुत छोटी छोटी जो जानकारियां होती है, कई बार हम लोगों को देश के प्रति सोचने पर मजबूर करती है। हमारे लिए जितने भी कानून बनते हैं उनकी प्रक्रियाएं क्या है, आज भारत देश के 90% निवासियों को पता ही नहीं है। कानून बनते कैसे हैं, बनाने वाले किस तरीके से वह बहस करते हैं और किस तरीके से किसी कानून पर इतना ज्यादा वाद विवाद होने के बाद फिर हमारे सामने वो आते हैं। ये जो पूरा का पूरा युवा संसद का माहौल क्रिएट किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 15-16 दिनों से हमारे 9 to 12 के सभी विद्यार्थी जो इस युवा संसद कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हैं,
अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर तैयारी की। इतनी तैयारी से ही ये कार्यक्रम इतना शानदार हो पाया। मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी उपस्थिति से असली संसद के जैसा महसूस हो रहा है। इसके अलावा इन विद्यार्थियों को सही ट्रैक पर सही तैयारी के साथ अपनी वाणी में धार देने के लिए जिन अध्यापक और अध्यापिकाओं ने शानदार मेहनत की है, मैं उन अध्यापकों को नहीं भूल सकता। जितने भी शिक्षक साथी इसमें लगे हुए हैं, खास करके हमारे अंबुज सर, मधु मैम, मानसी मैडम, और मैं सबका नाम नहीं लूंगा, वैसे पूरा स्टाफ ही इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है। सर तो खैर विद्यालय की इंजन है, पूरी दुनिया डब्बों पे ही ध्यान देती है, लेकिन जाहिर सी बात है धुआं केवल इंजन को ही निकल रहा है। मेहनत सारी इन्हीं को करनी है। आप देख रहे हैं हर काम के लिए सर तो हमेशा आगे रहते ही हैं। सो इनको धन्यवाद देकर के मैं इनकी गरिमा को छोटा नहीं कर पाऊंगा। और बाकी के अभी जो बच्चे जो सामने बैठे हैं उनको देखो धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। वैसे अब तो घर की बात है, घर की बात है, देना पड़ेगा शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब हमारी मुख्य अतिथि महोदया यहाँ से बोल रही थी तब भी हमारे बहुत सारे नटोरियस बच्चे है ना, क्या तो एक दूसरे को हाथ लेके बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे आराम से बात कर रहे थे, कुछ बच्चे हंस रहे थे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जब भी कोई मुख्य अतिथि हो, है ना, जब भी, तो कृपया उस समय एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। एक ये छोटी सी बात जो आपके व्यवहार से रिलेटेड है, किससे? उसके लिए 9th 12th के वे विद्यार्थी जो पूरे समय बैठे रहे उनको तो पूरा धन्यवाद, और जो बीच में उठ सबको देना ही जरूरी है। ये माइक सेटअप करने वाले, इवन मैं आपको बताऊं हमारे सामने वो शानदार वीडियो शूटिंग लेने वाले जो भाई साहब है, इनको भी धन्यवाद है। और ये देखो व्हाइट हाउस बना रखा, बढ़िया शानदार टेंट, हम इन्हें भी कैसे भूल सकते हैं। अगर टेंट नहीं लगता तो माहौल नहीं बनता, सही कह रहे हैं ना। तो उन टेंट वाले हमारे जो भाई साहब है उनको भी धन्यवाद। और फिर कुछ लोग जो छूट गए हो, निश्चित रूप से कहते समय हम लोग सबका नाम नहीं ले पाते, ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में योगदान देने वाले हर एक व्यक्ति का मैं तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।